Hello everyone. I welcome you all to Experience Humanities. So, today we'll be dealing with federalism, that is Democratic Politics, Chapter 2, Federalism, Class 10. So, first we will be looking into what is actually federalism, and then we will be looking into the features of federalism, which are important. So, let's start. Now, when we talk about federalism is actually distribution of power between the governments, that is the central government and the state government, that is at different constituencies. This is the distribution of power. एक तरीका से ये ऐसा होता है जैसे हम कोई पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में किसी भी गवर्नमेंट, उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। जब हम पावर को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं तो उसको हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, जैसे इट कैन बी एट द सेंट्रल लेवल और इट कैन बी एट द स्टेट लेवल और इवन मोर डाउन, that is the जिला पंचायत and the that is panches, sarpanches that are there in the villages, so village panchayats. So all these are more at a smaller level, that is local government level. So this is actually the concept of federalism, when powers are distributed among the constituencies from the central to the state. Okay, so now we move on to the second part, that is features of federalism. Now, how this federalism is important is what we are going to look into. Two or more levels of government. Now, as I told you, what is actually a federalism? When the distribution is there among two powers. That is, जब हम कोई भी पावर को दो भाग या दो से ज्यादा भाग में डिवाइड करते हैं, जैसे हमारे इंडिया में जैसे सेंट्रल लेवल है, फिर स्टेट लेवल है, फिर लोकल गवर्नमेंट है, तो all these levels are distributed. So this is what is actually called federalism. Now, different tiers of government. Tiers refers to when the government is divided into three or more kinds. That is the legislature, judiciary, executive. So all these bodies are what? All these bodies are defined. They have to perform certain functions. They are given certain work by the constitution itself, and it is defined. So they cannot move on or away from the guidelines issued to them. So basically क्या होता है कि ये जो तीन bodies हैं ये इंडिपेंडेंट होती हैं और इन पे किसी का फोर्स नहीं हो। ये अगर गाइडलाइन के अलग काम करती हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो इन पे प्रेशर आ सकता है दूसरे इंडिपेंडेंट बॉडी, जैसे एग्जीक्यूटिव अगर डायरेक्शन चेंज करके दूसरा गाइडलाइन पे चल रहा है तो जुडिशरी उसको रोक सकता है कि यू आर गोइंग फ्रॉम द पाथ, अवे फ्रॉम द पाथ, यू आर अवे फ्रॉम द पाथ, यू शुड कम बैक टू योर पाथ. So all these things are important when we talk about tiers of the government. Now, no change in the fundamental provisions. Now, as I told you, these powers are defined. So no one can go away from the constitution. कोई भी जो भी बॉडी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग जाके कोई काम नहीं कर सकता, तो कोई भी प्रोविजन चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो. दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस. जो भी पॉलिसीज बनेंगी, जो भी पॉलिसीज कोई भी गवर्नमेंट लाएगी, वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी. जैसे मान लीजिए कि कोई रिजर्वेशन दिया जा रहा है किसी को भी किसी सीट्स के ऊपर, तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस. इट शुड नॉट बी कि उसको ज्यादा दे दिया इसको कम दे दिया. तो इस तरह से डिफरेंशिएशन होता है दो पावर्स या दो बॉडी के बीच में. So as we studied in the first chapter, the power sharing is important for a proper balance and unified way a country runs. Now, moving on to the next, court solves dispute of different levels. Now, judiciary जो एक बॉडी होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर किसी भी गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो इस जुडिशरी का काम आ जाता है यहाँ पे कि वो जैसे उस डिस्प्यूट को सॉल्व करे,
उस डिस्प्यूट को ज्यादा बढ़ने ना दे। इससे क्या होता है कि जब the development is basically hampered, so this should not arise, this should not go beyond the things. So the judiciary or the courts, that is, judiciary is basically the courts. So courts that are there in the states and at the central level, that is the Supreme Court, that is the apex court of our country. So all these things are important because जब भी डिस्प्यूट अराइज होगा तब ये कोर्ट्स मीडिएट करेंगे दो पार्टीज के बीच में जिसमें डिस्प्यूट अराइज हुआ है। ओके, सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड स्पेसिफाइड। नाउ किसके पास कहां से कितना रेवेन्यू आएगा, ऑल दीज थिंग्स आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि स्टेट गवर्नमेंट को इतना रेवेन्यू लेना है, स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट से लेने के लिए इतना पैसा होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसको ज्यादा दे सकती है, अगर जब एज एंड व्हेन नीडेड। सो दिस ऑल थिंग्स आर स्पेसिफाइड, इसके अलावा नहीं कर सकते, कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हाँ दिस पावर इज स्पेसिफाइड, सो यू हैव टू गिव दिस अमाउंट ऑफ मनी और दिस अमाउंट ऑफ रेवेन्यू शुड कम फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया, तो उतना रेवेन्यू आएगा, उस जगह पे आएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड। नाउ टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव, देखो फेडरलिज्म का दो ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जांपल, तो बेल्जियम में क्या था, पावर को बैलेंस कर दिया, लेकिन श्रीलंका में क्या हुआ, वहां पे मेजोरिटी को ज्यादा फोल्ड और एग्जांपल देके और वहां पे उन लोगों को ज्यादा स्टेटस मिला। तो व्हाट गेव दिस पार्ट वाज द यूनिटी वाज हैम्पर्ड इन श्रीलंका, बट व्हेन वी टॉक अबाउट Belgium, it was not hampered there. So you need to keep in mind how unity is there and how accommodation of power is there, how balance of power is situated or there in the country. Because once the power is balanced, there shall be no dispute and the development process will not be hampered at all. So this is the objective of federalism in any country. So I hope it would be clear in your mind the concepts of different federalism. And so by this I sign off from the video. So if you like the video, please like the channel, subscribe the channel, press the like button, and do share it even, so that we are inspired to do lot of good works for you. And we'll meet again in the rest parts of the video where we will be discussing the rest of the chapters, and also we will look into different things that are there in the chapter about how concurrent lists and state lists are divided and who looks after concurrent list, who looks after state list, all these things. So thank you everyone. So let's meet in the second video.